हाय एवरीवन। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में शायद जो भी चीज़ है उसकी शुरुआत और उसका अंत फिलॉसफी से होता है। अब इस बात का मैं साइंटिफिक एविडेंस तो शायद नहीं दे सकता, बट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग विकिपीडिया, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया टिल डेट। विकिपीडिया के बारे में कहा जाता है कि इफ यू स्टार्ट विथ एनी पेज एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक ऑफ दैट पेज एंड देन कंटिन्यू लाइक दैट, you always land at the page of philosophy. Let's take an example. Let's say you start with page on data. You click on the first link that leads you to set, which then leads you to math, which then leads you to quantity, which then leads you to property, and that finally leads you to philosophy. अब इसको प्रमाण लेके अगर हम एक बार के लिए ये भी मान ले कि everything starts and ends with philosophy, तो क्या हमेशा से ऐसा था? शायद नहीं. To understand this, let's take a look at our history. आज से शायद 450 करोड़ साल पहले धरती यानी the earth that we know of was born. About 3.5 billion years ago, यानी 350 करोड़ साल पहले life first appeared on our earth. Fast forward to 12 million years ago, primates appeared. 300,000 years ago, Homo sapiens appeared. And finally, 10,000 years ago, the Neolithic revolution, or as we commonly call it, the agricultural revolution, took place. Now, why are we discussing all of this? And frankly, what does it have to do with philosophy at all? It was only after all of this happened that humanity finally found a way to settle down peacefully and was no longer meandering and wandering from place to place that the cognitive revolution started kicking in. And finally, the earliest formal schools of philosophy appeared only 4 to 5,000 years ago in India. In fact, in the West, it was much later, around 2000 to 2005 years ago. इस वीडियो में हम इसी इंडियन फिलॉसफी के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट पे गौर करेंगे एंड हमें काफ़ी गर्व होना चाहिए कि ये दुनिया की शायद ओल्डेस्ट फिलॉसफी है. हम इसकी टाइमलाइन और एवोल्यूशन समझेंगे एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी समझेंगे. शुरू करने से पहले एक बार गौर करते हैं कि फ़िलॉसफी है क्या. इफ़ यू आर टू आस्क मी, फ़िलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस. आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा, चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, philosophy is still a greater part of our life than we actually think. A lot of things that we casually assume and casually say in our lives, concepts like Bhakti, मृत्यु, ईश्वर, कर्म, जीवन, मोक्ष, philosophy नहीं तो और क्या है. जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले देखा, about 10,000 years ago, after the Neolithic revolution took place, humanity finally got a chance to wonder and think about what is life, what is reality, what is knowledge, what is existence. And उस टाइम पे this quest for knowledge is what philosophy represented. And today, it still represents our yearning to understand those dimensions of life that are beyond the grasp of the specialized fields of physics, chemistry, biology, which, as I mentioned before, interestingly, were once philosophy too. तो इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम अब इंडियन फिलोसफी से स्टार्ट करेंगे. अराउंड 1500 BC, यानी आज से लगभग 3 से 4,000 साल पहले, we made our first successful feat at crystallizing our understanding of the world in the form of Vedas. It's important to note that Vedas are not considered to be created by someone. Instead, they are simply a compilation of what already exists, done by sages of that time over thousands and thousands of years. These Vedas mark the first milestone in our timeline of evolution of Indian philosophy. वेदों का फिलॉसफी या दर्शन के साथ संबंध को अगर और भी गहरे तरीके से समझना है तो हमें वेदों के स्ट्रक्चर को समझना होगा. अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझना हो तो हर वेद के 4 भाग होते हैं. सबसे पहले भाग को कहा जाता है संहित, एंड दिस इज द पार्ट विच इज सपोज टू हाउस ऑल द मंत्रास. द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द ब्राह्मण, एंड दिस इज वेयर ऑल द रिचुअल्स ऑफ द हाउस होल्डर वुड बी लिस्टेड. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पीपल हु यूज्ड टू परफॉर्म ऑल दीज रिचुअल्स also started being referred to by the same name, Brahman. The third part is called Aranyak, which had a detailed description of how you can live a life of renunciation in the forests. But it's the fourth part which is of most interest to us, and that is the Upanishads, which is where all the philosophy of the Vedas is housed. And क्योंकि ये सारी philosophy वेदों के अंत में पाई जाती है, इसलिए वेदों के philosophy, उपनिषद के philosophy को वेदांत भी बोलते हैं. ओवर टाइम हमारे इंडियन सोसाइटी में वेदों का इंपॉर्टेंस और भी गहरा होता गया, एंड देयर केम अ टाइम जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ग्रेजुअली सबस्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस than the philosophy that was found in the Upanishads. And as a response to these orthodox Vedic practices came a series of other philosophies, which marks a second milestone in the timeline of Indian philosophy.
एंड क्योंकि इन दार्शनिक विचारधाराओं का मूल उद्देश्य ही वेदों का खंडन करना था, इसीलिए इन्हें नास्तिक दर्शन भी बोला जाता है, और इन अदर वर्ड्स नॉट हैविंग आस्था इन वेद। कुल मिला के देखे जाएं तो ये 3 दर्शन हुआ करते थे, चारवाक दर्शन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये सब कुछ लगभग 2500 साल पहले हुआ। एंड इस समय के अगर हम महान व्यक्तित्व की सूची बनाएं तो उसमें गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीर 2 प्रमुख नाम निकल के आएंगे। इसने सच ही कहा है कि समय का चक्र घूम के वापस वहीं आ जाता है। आज जहाँ उजाला है वहाँ पे कुछ देर के बाद अंधकार होगा, बट फिर उजाला वापस आ ही जाएगा। वैसे ही कुछ हुआ आज से लगभग 1000 साल पहले। द नेक्स्ट फेज इन इंडियन फिलोसफी वॉज वन where this Astha in Ved again got reinforced. Basically, this phase saw the emergence of Astic philosophies as a response to Nastic darshan. कुल मिला के 6 फिलोसफीज थी, जिसकी वजह से इन्हें षट दर्शन भी कहा जाता है। एंड वो है सांख्य योग, न्याय वैशेषिक एंड मीमांसा वेदांत। आज जिसे हम सनातन दर्शन बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति एक्चुअली में इसी फेज में हुई। जाने अनजाने में हमारी डे टू डे थिंकिंग बहुत सारी ऐसी आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड हैं जो कि फिलोसफी का पार्ट है। Most of the ideas that we believe in or talk about actually have their roots in the Vedanta philosophy. The next phase in Indian philosophy came about 800-900 years ago with the arrival of Islam in India. इस समय वेदांत का महत्व हमारे जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ा। वेदांत फिलोसफी के 3 अहम खंड है। एक है उपनिषद, जैसा कि हम जानते हैं। 2 और महत्वपूर्ण खंड है गीता, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। एंड इस फेज में इन टेक्स्ट पे बहुत ही डीप लिटरेचर का क्रिएशन हुआ। इस फेज में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो है आदि गुरु शंकराचार्य का, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दार्शनिक स्कूल की स्थापना की। वैसे तो अद्वैत वेदांत बहुत ही गहरी फिलॉसफी है, बट इसको अगर समराइज करना हो तो इसकी 2 प्रमुख विचारधाराएं हैं। नंबर 1 कि जो जगत है, दुनिया है, वो मिथ्या है। मिथ्या का ये मतलब नहीं है कि जगत सत्य नहीं है, अपितु वो एक व्यवहारिक सत्य है। इन अदर वर्ड्स, इट डजंट अपीयर इन द फॉर्म दैट इट एक्चुअली इज। और जो दूसरी विचारधारा है वो है तत्वमसी, यानी आप ही ब्रह्म हो। इन अदर वर्ड्स, ये दुनिया, इसके अंदर सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु या आसपास जो भी हमें दिखता है, ये सब उस एक ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप है। इन अदर वर्ड्स, वी आर ऑल सिंपली वन कॉन्शियसनेस। अद्वैत वेदांत की सबसे यूनिक बात यह है कि वेदांत फिलॉसफी को इतनी लॉजिकल तरीके से प्रस्तुत करता है कि इसका खंडन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड इसलिए ऐसा कई बार माना जाता है कि अद्वैत वेदांत इज द अल्टीमेट फिलॉसफी। बट इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों का भक्ति पे से विश्वास उठने लगा। आप ही मान के देखिए, इफ़ यू रीइंफोर्स द बिलीव दैट वी आर ऑल कॉन्शियसनेस, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति, डिवोशन विल ग्रेजुअली स्टार्ट टू dwindle in this society. And as a response to this anti-bhakti movement came the bhakti movement और वैष्णव वेदांत, जिसने जगत और ईश्वर भक्ति को वापस से रीइंफोर्स किया। वैष्णव वेदांत वैसे एक फिलॉसफी नहीं है, अपितु इसके अंदर अनेक फिलॉसफी है, जैसे विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, द्वैतवाद, etc. In some ways, Sikhism also falls in the same bracket of Vaishnava Vedanta, where it reinforces the idea of एक ओंकार, एक निर्गुण ब्रह्मन, without really establishing जगत as मिथ्या। और जैसे अद्वैत वेदांत के लिए आदि गुरु शंकराचार्य हुए, वैसे ही वैष्णव वेदांत में हुए रामानुजाचार्य, संत कबीर, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि। इंडियन फिलॉसफी में द 5th बिग वेव केम अराउंड द टाइम क्रिश्चियनिटी केम टू इंडिया, यानी आज से लगभग 300-400 साल पहले, when India was under the British rule. This phase is often referred to as the Renaissance of Vedanta or the rediscovery of Vedanta. This was the time when India was suffering under the British rule, and the Western world often presented strong criticism about the Indian culture and Hindu religion, saying that an entity as diverse and as vivid can never be one thing. As a result, this phase saw a number of stalwarts like Raja Ram Mohan Roy, Keshav Chandra Sen, Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekanand, Aurobindo Ghosh, Mahatma Gandhi, Dayanand Saraswati, to name a few, coming to the forefront to present a unified face of Hindu religion to the Western front. And this was the phase when Vedanta got coupled with nationalism. Often, when we talk about Indian philosophy, this is where it all ends. However, when in almost all fields, India is said to have begun on a new journey post-independence, why should philosophy be left out? Yes, indeed. As unfortunate as it may sound, even Neo-Vedanta couldn't get rid of all the evils as it was thought, and that's why
The first few years of post-independence saw the emergence of something called as Navayana or Neo-Buddhism by Dr. Ambedkar. This was also the phase when a number of other spiritual leaders like J.D. Krishnamurti and Osho Rajneesh became popular, and the study of Indian philosophy is incomplete without paying attention to what they had to say. This brings us to the end of a very quick tour of the 5,000 years of evolution of Indian philosophy. जाहिर सी बात है 5,000 साल के इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन को 5 से 10 मिनट की वीडियो में कवर करना doesn't do justification to the topic at all. However, I hope it gave you understanding of how rich our history and culture has been, and more importantly, which, as I said, is the world's oldest philosophy. And I hope it would have sparked or rekindled some interest in this wonderful subject of philosophy, especially Indian philosophy. Over the next few months, I'm planning to go deeper into each of the concepts that we just spoke about, and I hope you'll be a part of my journey as well. इस वीडियो की प्रेरणा के लिए मैं विकास दिव्य कीर्ति का आभारी हूँ, जिनकी वीडियोस What is Philosophy and Introduction of Indian Philosophy from Vedas to Osho proved to be an invaluable resource in creating this content. आशा करता हूँ हम जल्द ही मिलेंगे, and तब तक के लिए टेक केयर, बाय.